कल भी तो एंड के टाइम पे तभी तो मैडम ने उधर से किया ना। मैं क्या बोल रही हूँ, एक जने के मोबाइल में ये चालू रखना, जिससे नेटवर्क कनेक्शन हो गया कम से कम मोबाइल पे अपन स्पीड वोट ऑफ थैंक्स तो दे देंगे। बस स्ट्रीमिंग नहीं होगी पर वोट ऑफ थैंक्स तो चला जाएगा। और मैक्सिमम लोग वैसे भी कॉल पे हैं, इधर कम ही लोग थे, 20-22 लोग थे। डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट हो रहा है तब तक यूट्यूब स्टूडियो तो करो। हॉटस्पॉट लगाओ, हॉटस्पॉट लगाओ मैम। मेरे को ये दिखना चाहिए ना कितने लोग आ रहे हैं। ओपन टू ऑल कर देंगे ताकि सब जने आके ज्वाइन कर लें। अभी तो प्रॉपर्टीज में जाओ, डिस्कनेक्ट हो गया शायद, दिख नहीं रहा होगा। हाँ अभी करो, ओके। ये ऐसे हुआ था कल, क्योंकि कल अपन जब लैब में बैठ के मैं ट्राई कर रही थी ना तभी हुआ था। जो आहे ना हा इकडचा पोर्शन हा दिसत आहे ना, याला कमी करा नाही ना. त्याला क्लोज करावं लागते तिथून, कुठून? ह्या इथे क्लोज वहाँ करावं क्लोज कर देंगे, बट स्टिल भी वो आधा ही दिख रहा है ना स्ट्रीमिंग के टाइम पे। लागते. तर तो ते जे आता हे जे यूट्यूब स्टुडिओ आहे ना, ओबीएस OBS. बहुत ज्यादा बड़बड़ होती बाहर में। ओबीएस ओपन करा. हा जो आहे ना हा पोर्शन नाही पाहिजे ना, हा तो लहान करून टाका. नाही नहीं नहीं, एक मिनट, ये होएगा होएगा, रुको। इसको है ना ऐसे करने का है। इसको बाहर निकालना. इधर से। अच्छा साइज बढ़ा. मतलब सिर्फ यूट्यूब पे सिर्फ इतना स्ट्रीमिंग होना चाहिए। इसको भी काट सकते हैं, रुको। यूट्यूब पे तो ही दिखेगा। पर जो इधर की स्क्रीन दिख रही थी वो आज नहीं दिखेगी. झालं हे हे झालेलं आहे. आता लिंक आहे ना मॅडम, झालेलं सगळ्यांतच भेटलं ना लिंक. तीच आहे ना लिंक, हाँ यूट्यूब की लिंक. यूट्यूब के लिंक अभी नहीं भेजो, अभी मैंने नहीं ये वाला. वही पुरानी वाली कॉपी कॉपी पेस्ट पेस्ट करो। करना. देखो मेरे को आपका फोन में करती हूँ मैं। आप यूट्यूब की लिंक निकालो तब तक। स्क्रीन स्टूडियो में जाओ। रुको, अपन ने वो ऑन नहीं किया है, रुको पहले ऑन करने दो ना। नहीं पहले स्टूडियो कनेक्ट करो स्टूडियो फिर ऑन कनेक्ट करना करेंगे। पड़ेगा. रुको रुको, मैसेज नहीं डालना, एंटर नहीं डालना। आप ये स्टूडियो ऑन करो फिर, क्योंकि उसमें बैठना पड़ेगा, जैसे 90 खत्म हो डे टू सेशन। कंटेंट में जाना पड़ेगा ना. कंटेंट लाइव, लाइव हो गया ना स्ट्रीमिंग लाइव। डे टू. डे टू सेशन और एआई टूल्स, हाँ इसका सिर्फ शायद पर बस हाँ बस बस बस। और भेज दो अभी. वीडियो लिंक ते कशाची आहे ती? त्याची त्याची त्यांना गूगल मीटची मैं भेज रही हूँ. पाठवते काही नाही. उद्या ओपन टू ऑल करने दो ना। इशू पास करके कॉल करूँगी। मैंने एक लिंक भेजी आपको. So I will send the link on your account. The same link. Yes. 10:30 है. Sir, now the link is open for everyone, so you can join also. आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है, आप क्या देख रहे हो? अच्छा वो लिंक भेज रहे हो? हाँ हाँ वो मैडम को भेज दो आप पहले। मैंने वैसे आपको मैसेज डाला है. जॉइन करवा रही सबको, हाँ इनके सेटिंग नहीं हो रही। स्ट्रीमिंग चालू हो गए काय? हाँ स्ट्रीमिंग चालू है। आणि स्ट्रीमिंगची पण लिंक दिल्यानंतर कारण आपल्याला नाही येते. डे टू यूट्यूब लिंक. ठीक आहे झालं. मी आता व्हॉट्सअप क्लोज करतो. व्हॉट्सअप क्लोज करा. नाही नंतर कधी लागलं आपल्याला काही काम करायचं झालं तर कुठून भेटेल. काय पाहिजे. त्या दिवशी काल जसं सेशनची पटकन हे झाली होती, मग आपण पटकन व्हॉट्सअपवर घेऊन घेतली होती. अशी जर आज वेळ आली तर काय आहे नाही आज चॅनलच येईन होता. नाही ना. याला काल जसं त्यांचं लावलं होतं काय लावलं होतं. लँड केबल तशी लावून घ्यायला पाहिजे होती. याला नाही लागत ना माझ्या याला.
वाईफाई वाईफाई से आपण जे बोललं तर ते दाखवत असेल ते बडबड. उसके लिए क्या मैडम ते माइक्रोफोन भी बंद है ना? तब तक वो लगा के रखना है ना पीपीटी. हाँ वो प्रेजेंट करो प्रेजेंट पीपीटी प्रेजेंट करो. अभी आपका सब दिख रहा है, आप क्यों चालू कर रहे हो? तो लाइव खैर किसी को दिया नहीं ना अभी तक लिंक. नहीं ये चालू करो, ड्राइव में जाके पीपीटी ऑन करो, उसका फ्लैश ओपन करके रखो. मीट कहाँ गई मेरी? मीट कहाँ गई? मीट कहाँ गई मेरी? बंद हो गई है. उधर चालू है. वो उधर चालू की शायद इसलिए तो नहीं इधर बंद हो गई. यही वाली चालू कर दिया ना. स्विच कर रहा है वो. गड़बड़ हो जाएगी स्विच किया तो, क्योंकि दोनों में चाहिए अपने को. उसमें करो, उसको सबको अलाउ करते जाओ. ये पीपीटी चालू करनी पड़ेगी उसके लिए. वो ड्राइव पे कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, पीपीटी ऑन करो ड्राइव से. मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है मैंने। हाँ तो अपने लिंक होना दी किसी को. दी नहीं. पर हम दिख रहे रिकॉर्डिंग में स्टार्ट नहीं किया अभी तक, तो दिखने दो जितना देखते हैं. और माइक बंद किया था नहीं. नहीं फिर भी उसमें साउंड क्यों चला जाता है ये नहीं समझ में आया. डिलीट नहीं होगा क्या? देखो यहाँ से आवाज आ रही क्योंकि डिलीट नहीं होता क्यों. इसको प्रेजेंट कर. हो गया प्रेजेंट कहाँ से? स्लाइड शो प्रेजेंट नहीं करते अपन कैसे. फिर मैं पूरा दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है ना. मैं फिर बाद में जब वो सर प्रेजेंट करेंगे तो इसको भी बंद कर दी, स्टॉप कर दी. हाँ स्टॉप प्रेजेंटिंग. अच्छा स्लाइड शो पे जाओ फ्रॉम बिगिनिंग. अभी देखो वहाँ क्या दिख रहा है. यू आर प्रेजेंटिंग योर ये देखो वो दोनों को दिख रहा है. ये देखो ये आ रहा है, देखो. वो ठीक है। प्लीज स्टॉप शेयरिंग कर देना अभी. तो- बैक उधर जाओ. यहाँ पे नहीं जाते हैं इग्नोर करो तो मैसेज है ऐसे. देखो ये फिर भी है ना, ये आ रहा है. फिर से स्टॉप प्रेजेंटिंग करो. वो स्लाइड शो भी नहीं आ रहा है, वो आपका पीपीटी दिखा रहा है. ये नहीं दिखाना नहीं चाहिए. मैम ये पूरा आएगा ना अभी. नहीं आया, इसमें नहीं आएगा. वो गूगल मीट करता है. जीमेल जी तो गूगल मीट थोड़ी वेट करता है, यूट्यूब वेट करता है. फिर से स्टार्ट करो प्रेजेंटेशन और विंडोज पे जाओ. इसमें ये चालू करो, वो दोनों अलग अलग विंडो ले लेना. अभी है ठीक है. ऑल टैब ऑल्ट ऑल्ट टैब ऑल्ट तो वो विंडो चेंज करता है, शॉर्टकट नहीं है इसका. अभी इसमें है ना, सबको व्यू करो और सबको अलाउ करते जाओ. इसमें इसकी सेटिंग अलाउ एडमिट ऑल. कितने लोग बढ़ रहे हैं देखो. जितने भी लोग आ रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, एडमिट करते जाओ. ये सेटिंग नहीं है वहाँ पे जो अपन कर रहे थे ओपन टू वाली. आज कोई पीआरपीसी स्टाफ पे डालने की हाँ जरूरत नहीं अब शिशुपाल सर को ये करना पड़ेगा ना हमें. ये इनको पहले एडमिट किया. अभी हाँ शिशुपाल सिंह को भी ढूंढो इसमें. ये डॉक्टर शिशुपाल को ढूंढो ये इसमें. स्क्रॉल करो. या लिस्टमध्ये पाहिजे आपल्याला. स्टिल नीचे स्क्रॉल करो. डॉक्टर पे जाओ, डॉक्टर है इनका. हाँ अभी इसको 3 डॉट पे जाओ. ऐड एज अ को होस्ट. नीचे नीचे को होस्ट. अब वो होस्ट हो गया. अभी स्क्रॉल नीचे कर. अभी वो अपने हिसाब से घड़ी अपना जैसे नहीं, और किसी को नहीं. किसी को स्पीच तो ना देनी है. स्पीच लेने के लिए अपने को होस्ट बनाया था सबको. मग आता आपल्याला बोलायचं आहे तर और मला ये अपनी सिस्टम है ना, अपन तो होस्ट है ही है ना. सिस्टम बात करनी है आपको पूरा टाइम. डायरेक्टली कुछ होस्ट का ऐसा करना नहीं है वहाँ से. अपना वीडियो बंद है. यूट्यूब पे क्या दिख रहा हमारा माइक चालू है क्या? लेकिन आप माइक कॉपी बंद है. करेंगे तो माइक बंद है. माइक बंद है. वीडियो देखो वीडियो बंद है. कितने हुए? 45. ये दोनों में इसलिए नहीं जा रहा ना, सेटिंग के कारण. इसमें सेटिंग एक में दिखा हुआ था.
वही ना, वो क्यों वो उसी कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसके वो सेटिंग के कारण नहीं हो रहा ना, क्योंकि अपने ने रिस्ट्रिक्शन करके रखा है ना कि एक ही सिस्टम ज्वाइन होएगा। मैं देख रही हूँ उनमें, इसमें सेटिंग कहाँ होती है, अब मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ। ये लोगों को, अब रुको थोड़ा इंतजार करो, तुमको ऐड करते हैं। नहीं, ये सेटिंग्स में नहीं है ना, नहीं उसमें भी नहीं है, ये सेटिंग एक्टिविटीज़ है। नहीं, म्यूटेड है उनका माइक। अरे फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो रहा है ना, वो सेटिंग होना उसके लिए, वो इसमें नहीं हो रही है, उधर हो रही थी अपनी, वहाँ पे वो वाले सिस्टम पे बैठे थे ना, तो वहाँ पे हो रही थी। मी इथे लावला तर इधर आ मीटिंग गया गेली ना, ना, सेमी हो मीटिंग गई इथं ना गेली बात। ना. कल कैसे हुआ? सेटिंग इनको सब एक्सेप्ट करो, मैंने गूगल करते हैं एक बार, सबको एक्सेप्ट कर लो आप। 90 के बाद बंद कर देना, और फिर है ना गूगल मीट की लिंक आप रेडी करके रखो मैम, मैसेज रेडी है ना, जैसे ही 90 हो जाए बंद कर देना, और उसमें गूगल मीट लिंक डाल देंगे। ते सगळ्यांना मॅडम ते हे बंद करायचं मॅडम, मायक्रोफोन आणि हो बंद है ऑलरेडी। नाही ना, किसका दिख रहा था अभी सगळ्यांचा कुछ ते सेटिंग मध्ये मॅम वो किधर से कहाँ कर 3 टीमू मधूनच जावं लागेल मग त्यांच्यासाठी. तीन पर क्लिक करावं, तीन डॉट अरे वो हेडफोन वो बंद है, बंद है, ऑल म्यूटेड देखो ना मैडम, ऑल म्यूटेड। जिसे म्यूजिक है ना होस्ट कंट्रोल कर सकता है। कैमरा कैमरा भी बंद है सबका। हो गया, एक मिनट दो देखूं मैं। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर आपके अकॉर्डिंग आप जैसे कंफर्टेबल हो उस तरह से आपकी कोई प्रॉब्लम ऑडियो सर, ये जो हमारे रजिस्ट्रेशंस हुए ये अमरावती से भी है, कुछ इम्फोसिस से भी आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर सब लोग इसमें हैं, सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ है वो सेटिंग, दिख ही नहीं रही है। हाँ कल एक्चुअली हमारे चैट जीपीटी और चैट जीपीटी ये कुछ हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ये है कि सब आपके लैपटॉप से करना पड़ेगा हमको। वही तो एक मिनट एक्सेस ले रही है, एक मिनट में एक्सेस ले रही हूँ सही तो कर देंगे। हेलो, ऑडियंस कशी आहे म्हणते, और यहाँ पे सेटिंग आ गई, यहाँ पे सेटिंग आ गई, ओपन कर दूंगी, कहाँ से थे मैम ये सेटिंग? पता नहीं, मैंने बंद करके चल के आ गई कहाँ से। अभी आप जॉब लॉगिन करो, सेम अब ये एआई टूल्स पे कहाँ से करूँ मैं लॉगिन? स्विच बैक करूँ?
हमारी विंडो दिख रही क्या? ये कहाँ से गई? हो झालं. नीट सगळ्यांना आता ये हमारी पीपीटी कहाँ है? बोल तो मैं बोल रही हूँ मुझे हटाना ही है. अभी देखो बंद हो गए सभी कैमरास. हाँ. हो गया बंद. हाँ, ये रहेगा ना. ये रहेगा. हाँ. मैं इसको ऐसे टाइम ये अपनी पीपीटी स्टार्ट करते हैं. सबको बदली क्या आपको हम इनॉग्रेशन स्टार्ट करते थे ना 10:30 बजे. 10:30 बजते हुए स्टार्ट करो. मैं बैठो. ये फिर से क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो गया ना, क्योंकि मैंने ले लिया था एक्सेस उसका। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये कंट्रोल है, उसका कंट्रोल आखिरी में जो ताला था ना, क्या अल्टर कर दो. इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो क्योंकि एक्सेस नहीं जा रहा है। 10:30 होगा। थांबा. बंद कर दो. एक साथ माझ्या बाजूला या. अपना कैमरा नहीं नहीं सिर्फ माइक्रो 1 मिनट है ना, एकदम एग्जैक्ट 10:30 और 10:30 वाले चालू करें तो चलता हो गया. ये छोटे कहाँ से? और आने दो ना लोगों का 74 ही है. एक गणित सर को कॉल कर देती हूँ. सर या स्टार्ट होगा रिसर्च. और अगर लिंक पूछा तो बोला सेम सेम एज ठीक है, लेकिन उनको उस करना पड़ेगा ना फिर. मैं एक्सेप्ट करता हूँ. एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा. ये छोटे को बनाओ तो फिर. अभी तो ओपन तो ऑल है ना. ये दिखने नहीं चाहिए ना. ये ये आपको दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है. ये ये आपको दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है. हेलो. सर 10:30 हो गए तो सेशन स्टार्ट कर दें. हाँ. उनको सिर्फ इतना ही दिख रहा है. Good morning all. I, Professor Yamini Babnikar, welcome to all on day 2 session on research proposal writing and AI tools in education and research. Today's speaker is Dr. Shishupal Kumar from IIIT Nagpur. Dr. Kumar's academic journey commenced with a bachelor's degree in computer science and engineering from Rajiv Gandhi Technical University in 2009. Building upon this foundation, he pursued a master's degree in information technology from the prestigious Indian Institute of the Information Technology, Allahabad, graduating in 2015. His passion for research and academic pursuit further propelled him to pursue a doctorate in information technology from IIIT Allahabad, which he successfully completed in 2020. Dr. Shishupal Kumar is distinguished scholar and researcher whose work resides at the cutting edge of technological innovations and interdisciplinary explorations. With a profound expertise spanning across domains such as big data and analytics, Internet of Things, wireless sensor networks, data mining, machine learning, and data sciences. Dr. Kumar's contributions have left an indelible mark on the landscape of contemporary research. Dr. Kumar has 10 SCI publications. He has published 3 papers in international conferences. Also, Dr. Kumar's have 3 book chapters. In a summary, Dr. Shishupal Kumar's research profile epitomizes a relentless pursuit of innovation and interdisciplinary collaboration at the forefront of technology. Through his pioneering contributions and scholarly leadership, he contributes to shape the trajectory of research in emerging fields, inspiring the future generation of scholars and practitioners to push the boundaries of possibility.
Now I call Dr. Kumar to start the today's session. Thank you, ma'am, for the brief introductions. First of all, good morning, all. My voice listening. Okay, fine. So, first of all, I want to tell you, I don't believe in theoretical executions. I always believe in a practical executions of either any session or either any talk. So the everyone just try to give the talk on whatever the topic they have decided based on those topic. They try to just give the talk. But I always believe in executions. Whatever I am telling, those things how we can execute. So the today topic is research, how to write research proposal, and in the writing the research proposal, how we can use AI tools. So first of all, I come on the topic research proposal, right? What is research and what is proposal? So first, when we talk about research, that means somebody already search and research something on same topic, right? That means we are not doing any new things. Whatever the things someone done, those things I have taken, and over those things, maybe I can use some other methods, maybe I can use some other technology and try to optimize the result, the previous result, right? So that we can call like research. And every point of view, whatever the research someone done, those research I have taken, and on those research I have contributed something, either through the methods, either through the technology. But this is not our goal. How we can do the research, this is not our goal. Our goal is how we can write the research. Our goal is how we can write the research proposal. Everyone know, I think, whoever doing PhD or masters or assistant professor, I think everyone know how to write research proposal. At least the basic things you know about that. But again, because this is the topic, that's why I emphasize few points to write research proposal or to write research paper, right? So the first point, when we try to write any research proposal, what points should be? Anyone can guess what points should be to write any research proposal? You can also type on message in this message box. First, we have to communicate, because if we don't communicate, then then we can't learn. So for the learning or for the writing or for the listening, we have to communicate. Focus on the title and the topic. The scope of research problem definitions. Title, everyone can maybe the different opinion, but title we can fix, right? At initial point of moment, no one can decide the title. Topic might be we can fix. Novelty, I think, for the first step, when we write something or when we try to write something, we have to collect the data, right? We have to collect the data. Either that data could be research paper, or that data could be some blogs, or the data could be white paper,
but we have to collect the data, right? Once we collect the data, then we have to synchronize those data. First, we have to collect the data. After that, we synchronize those data. What is the meaning to synchronize those data? Meaning to synchronize those data to relate with our topic. Someone written, focused on the topic. Yes, try to relate those topic. What is our topic? So first we discuss about the topic, and then we have to reach on particular methods. Which kinds of methods someone taken? What is the results? We try to emphasize more over those methods. So first we emphasize collect data, and the second emphasize on the methods. Which methods someone solved? Here someone talk about novelty. But how we know that is the novel work? How we can know? Do you have any idea? How we can know whatever we are doing, those work is a novel work? You can also message me or text me. Do you have any idea? Okay. So when we talk about novelty, either in the research proposal or in the research paper, someone written, if the results obtained are new so far, I think results not decide novelty. I think that everyone agree on this point. Result cannot define novelty. In the existing work or in the older work, you can also find the code and you can use those methods and find the results, even find the good results. But results or good results cannot define novelty. So, for the novelty point of view, if we try to know the novelty, first we have to collect the data. What data? The research paper in the context of research proposal or in the context of research paper writing. So first we have to collect the data in the context of research paper. The paper should be the current year. The paper should be from the good journals. So how we can define the good journals? The someone also searching the paper and doing the research might be the paper just taken the paper, but don't know that paper, the base paper, whatever he has chosen, those paper is reliable or not. Whatever the result given in those paper, that is reliable or not. How we can distinguish? So we have to find out the paper from the good journal. What is the good journal? Somehow we can see the impact factor of the journal. But in the private journal also, they have the good impact factor. So we have to choose the paper from the reputed journal, that is IEEE.
the first of all we have to select the repeated publications. The publications, repeated publications could be IEEE, Springer, Elsevier, Wiley, right? So first of all, we have to choose a good journal, right? That impact factor should be very high. And from those journal, we have to select a current research paper. The current, that means the current year research paper. But before selecting the current research paper, we have to select what? A current survey paper. Whatever the area I have selected, on those area, the current survey paper we have to select. At least 3, at least. We can select more. And whatever the reference they have given, the first, the highly cited reference we have to choose. Those all gather as a data at a particular place. And after that, we'll read those. Based on those, we have to select a particular paper, the current year particular paper on particular topic, right? Then we can identify, okay, such kinds of work nobody done previous in the previous or in the past. Then we can choose this topic. After choosing this topic, you have to analyze about methods. Which kinds of methods they have taken to solve those problems. And then you have to come about, then you have to think about the results. So results doesn't matter or doesn't define novelty, right? So that is the brief about this research and research proposals. We say the first step is to collect the data. That is the first step, either to write research paper or research proposal. Then we talk about some tools, and through help of those tools, we can collect the data. Another where we can keep our data, that is also a dependent factor, right? Another point is, might be we can select our data, we can collect our data, but how we can utilize those data? Somehow I want to write a survey paper, and there I have collected around more than 100 research paper to write a survey paper or to write a research paper, or even though sometimes to write a research proposal. So can we read those 100 paper? And do you remember we can remember all the 100 paper points? It is not possible, right? That means we can synchronize whatever written in the 100 paper, those things we try to synchronize with our results, with our problem, not results, with our problem, right? So initially in the research, we don't have any tools. We do these things manually. Might be some for the citations, we can use some tools like the text editor, some text editor we can use for the citations. After that, we don't have much tools to write a research paper or research proposal. But from 2010 onwards, AI revolve, and after that, we'll get so many different kinds of tools. Even though to write a research proposal, even though to make the citations, or even though to decide the problem also. And even some tools are there, you can write some questions in between to find the answer. In between, that means
somehow when we write a research paper, we have the several points in the research paper, right? So either for those points, we have to read some different research paper, and based on those research paper, we'll write our point. But through tools, through AI tools, you can just put up those questions and you will get the answer. Here, one problem. What is those problem? The problem is once we get text from AI tools or generate some text from AI tools, those texts are comes under plagiarism or not. This is very important point. Might be like ma'am said in the yesterday session, you already listened about chat gpt. I don't much talk about the chat gpt because everyone talk about chat gpt 3 chat gpt 4, so I don't want to talk about more. We don't want I don't even talk about how to use this chat gpt. I want to talk about some other tools, right? There, how we can write the research paper. Even those research paper, you can find the free or plagiarism free. But the point is, really, we can write our research proposal or research paper through any AI, whatever the key you have given as an input. So based on those input they have generated, even though they have cited so many papers, and might be you cannot get any plagiarism, or might be the plagiarism is very less, around 5 to 6% or 10%, right? So those 5 to 6% plagiarism you can remove, or you can also keep as it is, because the 5% is allowable, there is no any issue. But the point is, whatever the text AI tools have generated, those those text we have to consider as a research proposal? No. We can use those texts to write the research proposal, but not as it is. Definitely, we have to write some sentences to synchronize between whatever the sentences generated by the AI tools. Right? So, this is our objective to achieve through this session. How we'll achieve? Even though if we have time, then definitely I will show you. Right? Then I will discuss about some tools. I think we have understood already what is AI, and we can write any research proposal with the help of AI or not. So let me first, I will try to share you. So as it is, we say the first steps is data collections and processing tools we required, right? In the previous, we do these things, data collections and processing, but manually, right? So we have some tools. For the example, we have web scraping tools or import.io facilities tools to collections a large amount of data from the web. You can use these tools. We can highlight this one.
this one, right? After that, we say the text analysis tools. The NVO and LexiMancer assist a researcher in equivalent qualitative data analysis. What is the qualitative data? We say once we try to, first of all, we collect the data, right? Data collections. So first of all, we collect the data. But from those collected data, we say in the previous example, there we say we have collected around 100 papers, but we cannot remember the 100 papers points according to my research methodology or according to my research topic, right? So there, what we can do, one by one, we can open the first research paper, and whatever the context we try to take from those paper, we can take those contexts and write in our word and just cite it. Okay, but through these tools, you can use this collected data and perform text analysis, and there you can find the confined text from those data, even though you can use very large data, right? So we say what is the benefit of these two tools. The first, we say web scraping tools like Octopus or import.io, and the second, text analysis tools NVivo and LexiMancer assist researcher. So LexiMancer is the tools. What is the benefit? We say automations of the data collections, ability to handle vast quantity of data beyond the human capability. So you can understand through this word how much capability they have. We have limited capability. Always we have very limited capability, even remember, even collect, even synchronize. We have the limited capability. But machines, they don't have limitations. Somehow the limitations they have, that limitations is other kinds that we are not going to relate with this research paper writing, but that is the computational limitations, right? That is the other kinds. But we are talking about in terms of data handling, there is no any limitations, right? But we say because once we increase the data size is very large the data, right? What the problem created? Once we increase the number of data, which kinds of problem occur? They are able to handle. We are only talk about these tools are able to just handle a big data. These tools are capable to generate a qualitative data, right? But say in terms of limitations, once we try to make the qualitative data and we are giving the input, maybe 200 research paper as an input, maybe 400 research paper as an input. So once we increase the number of input to take the qualitative data, what happened? Might be we can degrade our qualitative, or we can degrade our quality in the data. What is the reason behind this? Once we increase the number of paper, and we say if the number of paper is too many, once we collect it and there we try to write, might be we can degrade our data. Reason, in the many papers, the same point they have written in the different opinion, right? So we say in that context, might be we can create
nuisance in the data, noise in the data. We can understand like this example. We have 100 people. In the 100 people might be, we can increase more number of people. We can add some more 100 people again. So we have 200 people. Might be in the 200 people, we cannot identify any voice. So that is the problem of the machines. That is the problem of any models, that either the comes under the overflow of the data, right? The next, we have some statistical analysis tools, because once we collect the data, once we process over the data, definitely we required some statistical analysis. So we required some statistical tools. I think for this statistical tools you have already aware. There, the SciPy, NumPy, scikit, pandas, and ggplot2 in our language they have written. But in the Python also we have the several packages. There we can use, or we can perform the analysis over the data. Especially we talk about here in the terms of Python, pandas, right? And to generating the graph, I think that everyone used one tools, that is the matplotlib, right? Another, for the statistical analysis, we say machine learning platform. That platform we have to require, that written like the TensorFlow, the scikit-learn, right? So what is the TensorFlow and what is the scikit-learn at this moment not required, because I don't want to know about how to execute the TensorFlow, or how to execute, or how we can use this scikit-learn, right? That is not our matter. Our matter is how we can perform this analysis to using some tools. So here we are talking about AI, right? Here we are talking about AI. These tools are AI? Definitely not. These tools comes under AI? Definitely not. These tools are not comes under AI. Either the NumPy, either the pandas, or either the any packages of the Python, right? Once we talked about the AI tools, there we say AI, artificial intelligence. There, that means the human effort should be very less. Very less. Even I don't know what is the pandas, what is the NumPy, what is the SciPy. I don't know. But I want to use, right? So just I put our data and they can perform the statistical analysis. That is our goal, right? I just try to put the paper and someone can write the paper. That is our goal. Might be that paper should not match our expectations. That is the another point. But we try to require any kinds of tools that can write for me whatever the things I want. Right? That is AI. Everything we try to write automated, even though I don't know any knowledge about any algorithms, even though we don't know about what is the predictive analytics, right? That doesn't matter for me. So we say we have some more, like somehow we perform the literature review, reference management. So for that we required some tools, right? For that we required the AI based tools. So there, for the reference management, what we can do, either we can use the Google Scholar or Semantic Scholar. The Google Scholar, there we can download or cite. So whenever we try to cite any research paper, definitely we have to download the citations.
So those citations either we can down from the Google Scholar, or either where we can use, or where we have downloaded our research paper from the any particular publications like IEEE. So if I have downloaded some paper from the IEEE, then definitely we have to cite those paper. Cite, that means what? I think that everyone know about the citations, right? And why we require to cite any research paper. So we don't talk about much on this citations part. We try to talk about just the analysis part and the tools part, especially in the context of AI, right? So we say here, okay,